everybody, welcome to another video from our channel AVTE. आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन के fear की. Now fear is a very understated word. Fear is something जो I think examination से पहले एक बहुत common word है जो हमको सुनने को मिलता है. So what is exactly fear? The fear, the tension कि I will be able to perform well, I will be able to answer all the questions, क्या मुझे पेपर में सब आता होगा, is basically what goes on in everybody's mind before their examination. It's a very common factor that we see amongst each one giving examination these days. So I would just suggest that your fear is something which will not let you perform in your examinations. आपका fear ही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, not your friend during your examination. So we have some tips for you all that will help you get rid of that fear, and I'm going to start with the most common thing that we often ignore is your surroundings. जितना आप stressful surroundings को अपने पे हावी होने दोगे, the more you let the stressful surroundings take over you, the more you'll be overtaken by stress and fear. So remember, keep your surroundings calm and keep yourself very calm before your examinations, because that will not only improve your performance, that will also help you study better. Also, I wanted to give a mention to online examinations as well. Online examinations आज तक आप लोगों ने नहीं दिए होंगे या शायद इस साल पहली बार ही दे रहे होंगे. आपका पेपर ऑनलाइन के फॉर्म में भी हो सकता है और फिजिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो इस बारी आपको ज़्यादा डरा के रखेगी. सो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी इन जनरल कि बी प्रिपेयर्ड फिजिकल के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी. डोंट गेट कंफ्यूज कि हमको किसी ने बोला फिजिकल होगा, हमको किसी ने बोला ऑनलाइन होगा, एंड देन यू गेट कंफ्यूज जब पेपर आए. जस्ट बी प्रिपेयर्ड. इट्स ऑल गोइंग टू बी डिसाइडेड देन एंड दैट टाइम. So be prepared for both time of examinations, and the number one tip that you can continue with, you can prepare yourself is be familiar with both the system. Physical examination तो आप कब से दिए जा रहे हैं, so you know how the pattern is, आपको कैसे देना है. Online के लिए do as many mocks, as many practice tests as you can do to get familiar with the system. Know how you have to operate your computer, know you have to keep your charging of computer all the time. Be prepared with all these things जो हम सोचते हैं कि नहीं यार इसमें क्या preparation की ज़रूरत है, हम end में कर लेंगे. That is always going to cause end moment panic. So remember कि दोनों वे में your practice is going to be the key factor to your success. जो नेक्स्ट टिप है, आई थिंक मुकेश सर, विपिन सर जो इस चैनल में वीडियोस करते रहते हैं, आप उनको जानते होंगे. वो हमेशा बोलते हैं मेडिटेट, कीप योर सेल्फ काम. ना मेडिटेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ या मंत्र लगा लो. मेडिटेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. एनीथिंग दैट कीप्स यू काम एंड आपका फियर एंड स्ट्रेस को कंट्रोल में रख सकती है इज मेडिटेशन. समटाइम्स अ स्लो म्यूजिक एंड सिटिंग बाय योरसेल्फ कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. एंड इफ यू आर गुड एट मेडिटेशन, गो अहेड, सिट calmly, close your eyes, sit in peace. Don't let any thoughts, any stress disturb you before your examination. Then I would also suggest, fear तब आता है जब आपके अराउंड बहुत सारा स्ट्रेस होता है, राइट? सो ईट वेल. अपने खाने को ज़्यादा या कम मत कर दो जिस बिकॉज शिट मैंने पढ़ाई नहीं करी आज मैं खाना नहीं खाऊंगा. योर बॉडी level will be so low, आपका physical level to perform will be so low if you don't eat well कि आप वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे. So forget fear, your performance will be underperformance. The next suggestion that we have and the next tip, whatever you want to call it, is simple. Sleep well. Your sleep is what helps your body function, and पेपर से पहले बॉडी का फंक्शन होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. So do not compromise with your sleep. If you are someone who likes to study late in the night, wake up a little late, or if you're someone who likes to get up early and study, वो आपका personal choice है. But remember, you're taking your 7 to 8 hours of sleep ताकि आप बिना स्ट्रेस के, बिना फियर के पूरा दिन अपना फोकस रख के उस चीज़ पे फोकस कर पाए. दैट इज़ योर स्टडीज़. अनदर टिप दैट आई हैव विच इज़ गोइंग टू बी वेरी जेनेरिक, जो बहुत कॉमन होगी फॉर योर फिजिकल और योर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, इज़
read your instructions carefully. Now that everything is changing, आपका physical examination में भी कुछ instructions बदल सकती हैं. So कई वो rush में वो बाद में वो फियर इतना हो जाता है, शिट मैंने क्या करा है. आपको अभी भी स्कूल से धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस आती रहती होंगी. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू यू कम बिफोर योर पेपर्स. Make sure you are thorough with those instructions, you are following those instructions. I do not think there is anything then that will be an end moment fear factor for you. Avoid getting panicked. Shit मुझसे ये नहीं हुआ, shit मेरा ये रह गया. It's okay, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है. रिमेंबर उस एक आधा क्वेश्चन के चक्कर में कहीं आप पूरा कोर्स तो सफर नहीं करा रहे अपना. कीप योर काम, यू हैव टाइम. Focus on what has been left. You feel मेरे पास टाइम नहीं है. What you have done, be thorough with it. Similarly, this other tip is for your online examinations. Technical faults बहुत common है because it's not just new for students, it's new for an entire system in India जो online examinations दे रहे हैं. Technical faults, technical errors can happen. उस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम तो कभी भी डोंट लेट दैट फियर कम टू यू. टेक्निकल फॉल्ट होंगी तो वो सबके लिए होंगी एंड दे विल बी फिक्स्ड एंड यू विल गेट टाइम फॉर योर एग्जाम. इट्स नॉट लाइक टेक्निकल एरर हुआ तो आपको एग्जामिनेशन करने का मौका नहीं मिलेगा. Also, if you're submitting your paper online, I would just suggest that आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा. Whatever you're doing, if it's online या फिर आपको लिख के सबमिट करना है, just make sure आप सारा काम side by side सेव कर रहे हो. Whether it's in the system or whether you're writing and scanning it, make sure you're taking your photos on that time. Make sure you have everything ready because end moment में जब time आना वाला होता है, it creates panic. सो डोंट लेट दैट हैपन. आई नो ये बहुत फियरफुल फैक्टर रहता है, मैं ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे करूँगी या फिजिकल हो रहे हैं कि नहीं या वॉट एवर इट इज़. विद वॉट स्पेस एंड टाइम यू हैव नाउ, कीप everything mentally ready. It is going to avoid so much of that fear factor in your system. And the last thing is, it's not a tip, it's just a general advice कि पेपर देने के बाद अपने आंसर्स चेक करना मत भूलना. So to end this video, I will just say जो एंग्शियसनेस होती है एंड जो फियर होता है वही आपका सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर यू नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म वेल. अगर आप वो फियर, वो डर को अपने सिस्टम से निकाल पाओगे, वो एंग्जाइटी को, आप उसके लिए एक एक्शन प्लान रखोगे तो आपके पेपर्स डेफिनेटली अच्छे जाने वाले हैं विद व्हाट यू हैव डन. आपने जितना सोचा वो उतना ही जाएगा. वो फियर, वो पैनिक, उसको अपने पे हावी मत होने देना इज़ व्हाट वी कैन से एंड सजेस्ट. एंड आई नो कि इन थियोरी आप लोगों को सबको ये बात पता होती है, बट इम्प्लीमेंटिंग के टाइम ये चीज़ें बहुत टफ होती है. बट जस्ट रिमेंबर, व्हेन एवर यू आर लाइक fearful, remember it is not helping me. You all do the best of your abilities, and thank you for watching this video. And if you do like this video, share it with your friends, give this video a big thumbs up, and also don't forget to subscribe to our channel AVTE. And we will see you in our next video. And also click the notification bell because we have so much content for all of you. Thank you for watching, and we will see you next time. Bye bye.